तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ReCO16 by applying 18 electron rule. We have already learned how to use the 18 electron rule concept. लाइक दैट लास्ट क्लास में जैसे हम लोग पढ़े थे कि 18 रूल के कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक स्ट्रक्चर दे दिया, उस सॉरी कोई एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया, वहाँ पे कितना मेटल मेटल बॉन्डिंग है, number of metal metal bonds can be estimated, or you can think about the total structure of that particular molecule, or for example the number of ligands are not given. Say for example x, y, or z kind of things are given, and you have to evaluate the number of ligands to that particular molecular formula. So these are the kind of applications we can do by applying this 18 electron rule. But in these part, actually we want to learn how to draw the structure of ReCO16 by applying 18 electron rule, because there is some kind of tricky things which we will look into the solution. So now we will go through this. So first of all, in these question we will have to find out that how many number of metal metal bonds should be present in this structure, right? So now, as per the method, this is the overall molecular formula, right, that RH6CO16. जैसे कि हम लोग सीखे थे लास्ट टाइम कि ऐसा अगर कोई फॉर्मूला होगा तो फर्स्ट टाइम टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, first we have to calculate the number of metal metal bonds. So in that case we have to apply the 18 electron rule, or you can think that the molecule is obeying the 18 electron rule. That is, the total electron count should be equals to 18 per metal atom. So as there are 6 metal atoms, so the number of total electron count should be 6 into 18. That is, total number would be 60 plus 48, that is 108, right? So now how will you calculate the total number of metal metal bonds present in this structure? So for this, actually the method is like this, that total 6 rhodium atoms are there, so there should be total number of electrons that is 6 into 9, because rhodium is in cobalt group, so the number of valence electrons is 9, so total number of electrons would be 54, right? So these are 54 electrons contributed by rhodium. Then we are having 16 into CO, that is 16 number of carbonyls, which is contributing 2 electrons per carbonyl unit. So there will be total 32 electrons contributed by 16 carbonyls. Now we are assuming that there would be x number of rhodium bonds. So we are assuming this. Why we are assuming this? Because we have to calculate the, sorry, we have to draw the structure. So if we need to draw the structure, first we have to calculate, or first we have to estimate the total number of metal metal bonds present in the structure. So that's why actually we are assuming that x number of metal metal bonds are present. So therefore for each metal metal bond there will be 2 electrons. So the contribution will be 2x, right? 2x electrons for x number of metal metal bonds. So the total electron count will be 54 plus 32 plus 2x, which will be equal to, I think, 86 plus 2x. So now these 86 plus 2x should be equal to 108 if the total Re6O16 molecule is obeying the 18 electron rule formula, right? So if you are just calculating this, then this 2x will be equal to, I think, 22, right? Then x will be 11. So total number of metal metal bonds present, that is 11. So there are total 11 rhodium bonds are present. Now we have to draw the structure associated with these 11 rhodium bonds. So before going to the final solution, I want to just mention some important things that जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि बाई चांस अगर नंबर ऑफ मेटल एटम्स अगर फॉर एग्जांपल 1 हुआ तो कोई मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ही नहीं. अगर नंबर ऑफ मेटल एटम्स 2 हुआ, जनरली द अरेंजमेंट शुड बी लाइक दिस. देयर कैन बी more than one metal bonds, but the arrangement should be like this. Okay, so if there will be 3 metal atoms, so then there can be the possible arrangement should be like this, that is a triangular arrangement.
And for four metal atoms, there are two types of arrangement. Generally, we are looking into this. That is total four metal atoms. There can be total four number of metal bonds, or there can be total six number of metal bonds. But what is the number of metal bonds we are getting in case of this RHCO16? We are getting total 11 metal bonds, and the number of metal atoms present are 6. So what should be the expected structure of this RH6 unit, right? So RH6 means that there are total 6 rhodium atoms, and the bonds between these rhodium, that is total 11 number of rhodium bonds. So for 6 rhodium units, the possible arrangement will be like octahedron, right? So there would be these octahedron type of arrangement for these 6 rhodium, right? There will be octahedron arrangement. But notice, अगर यही octahedron arrangement यहाँ पे होगा और we are just giving the bonds for this octahedron arrangement, then there will be total rhodium bonds will be 12. Why? Because at the edge, these are the edge bonds, right? These are the edge. चार एज में चार बॉन्ड होगा और टॉप रोडियम के साथ चार बॉन्ड होगा एंड बॉटम रोडियम के साथ टोटल चार बॉन्ड होगा. टोटल 12 bonds we will get. But what is the actual number of rhodium bonds present in RH6CO16? That is total 11 bonds. So what should be the actual structure then? So this is the expected structure. Then what should be the actual structure? So now actually there are three possibilities. जैसे यहाँ पे टोटल 12 रोडियम बॉन्ड्स पॉसिबल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक रोडियम बॉन्ड यहाँ से कैंसिल करना है. तो कौन सा रोडियम बॉन्ड ड्रॉ नहीं करना है? दैट इज विच रोडियम बॉन्ड कैन बी एब्सेंट. नाउ देयर आर टोटल 12 bonds, right? So now there are three possibilities. What are these three possibilities? That is, whenever you are drawing the structure, one rhodium is actually at the means above the plane, one rhodium is below the plane, and these total four rhodiums are on the plane, right? So there are four rhodium bonds on the edge, four rhodium bonds are above the plane, and four rhodium bonds are below the plane. Now when you will cancel, or when you will try to figure out which rhodium bond will be absent, there can be three possibilities. Either one, for example, either one rhodium bond which is above the plane can be absent, whatever I have just shown here, that is these rhodium bonds can be absent. Now another case may be that one rhodium bond which is just at the edge can also be absent, like this structure. Okay, like this rhodium bond can be absent. So I will try to draw the rest of the structure. That is one rhodium at above the plane and one rhodium at the below the plane, and then there will be four rhodium bonds, and here will be four rhodium bonds. So total 11 rhodium bonds. And there can be another possibility, that is one rhodium bond which is above the plane can be absent, right? So there can be another possibilities, that is one rhodium bond which is above the plane can be absent, like 1, 2 and 3 bonds, and here 1, 2, 3 and total 4 bonds. So now the arrangement will be like this rhodium bond is absent. So now in all the three structures, the total number of rhodium bond is now equal to 11. Okay, now did we solve the problem completely? No. Why? Because we have
to place the total 16 COs, that is 16 carbonyls we have to place in this structure. अभी 16 कार्बोनिल कहाँ पे फिट करना है, बिकॉज there is not symmetric arrangement of these rhodium bonds, right? 6 rhodium bonds के बीच में कोई सिमेट्रिक अरेंजमेंट तो है नहीं अभी, क्योंकि एक rhodium बॉन्ड एब्सेंट है. सो जब हम लोग यहाँ पे CO प्लेस करेंगे, दूसरा कलर में मैं दिखाता हूँ, जहाँ पे CO प्लेस करना है वहां पे ध्यान देना है, जो रोडियम बॉन्ड एब्सेंट है, मतलब जहां पे जिस रोडियम के ऊपर एक बॉन्ड कम है, उस रोडियम के साथ 3 टर्मिनल कार्बोनिल अटैच होगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये रोडियम और ये रोडियम के बीच एक बॉन्ड एब्सेंट है. सो इन दीज 2 केसेस देयर विल बी 3 टर्मिनल कार्बोनिल. Okay, so there will be 3 terminal carbonyl. Now in this arrangement, these 2 rhodium bonds are having one bond short, so there will be 3 carbonyls, and similarly यहाँ पे भी 3 कार्बोनिल होगा, that is terminal carbonyl. So बाकी रोडियम के साथ क्या होगा, जैसे यहाँ पे इन दिस थर्ड अरेंजमेंट ये 2 रोडियम है जिसमें एक एक बॉन्ड कम है, तो इसमें भी 3 टर्मिनल कार्बोनिल और ऊपर में 3 टर्मिनल कार्बोनिल अटैच होगा. ओके, नाउ वी आर हैविंग टोटल 10 कार्बोनिल्स राइट लेफ्ट टू प्लेस इन ईच ऑफ द स्ट्रक्चर. तो अभी जो 10 कार्बोनिल होगा वो हम लोग कैसे प्लेस करेंगे, उसमें से 8 carbonyl, that is 2 carbonyl per rhodium will be terminal and rest of the 2 carbonyls will be bridging. Okay, so कैसे fill up करेंगे, that is very much easy. जो पास में रहेगा उसको हम लोग fill up करके छोड़ देंगे. जैसे क्या है, जैसे ये वाला जो arrangement है, that is the arrangement A. I am taking this B and this C. For example, in the structure of A, अभी ये रोडियम में क्या होगा, 2 कार्बोनिल होगा, दैट इज टर्मिनल कार्बोनिल. यहाँ पे भी 2 टर्मिनल कार्बोनिल, इसमें 2 टर्मिनल कार्बोनिल और इसमें भी 2 टर्मिनल कार्बोनिल हो जाएगा. नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 कार्बोनिल्स. ओके, रेस्ट 2 कार्बोनिल्स. टोटल वी हैव प्लेस्ड 8 + 6 दैट इज 14 कार्बोनिल्स. नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 कार्बोनिल्स. अभी ये जो 2 कार्बोनिल है ना, ये एक्चुअली ब्रिजिंग होगा. अभी किस किस के साथ ब्रिजिंग होगा, यहाँ पे क्या है, ये दोनों तो ब्रिजिंग नहीं कर सकता है. जैसे मैंने बोल दिया कि जिसमें जो रोडियम के ऊपर एक बॉन्ड शॉर्ट है उसमें ओनली 3 कार्बोनिल टर्मिनल होगा, और जो रोडियम 4 बॉन्ड्स किया है ऑलरेडी उसके साथ क्या होगा, 2 टर्मिनल कार्बोनिल होगा और एक ब्रिजिंग. तो जैसे ये 2 रोडियम है इसके साथ एक ब्रिजिंग कर देंगे, और ये जो 2 रोडियम है पास में इसके साथ एक ब्रिजिंग कर देंगे, बस हो गया. Are each 6 CO 16, that is arrangement, that is structure A, that is a isomerism. There can be 3 kind of isomerism, that is a structure of isomerism A. Now another structure we can draw, like in this case, in each of these rhodium there will be 2 terminal carbonyl, right? So 14 carbonyls we have placed, rest 2 carbonyls we should be placed like bridging. सो इज ये 2 कार्बोनिल के बीच एक ब्रिजिंग कर देंगे और ये दोनों कार्बोनिल के बीच एक ब्रिजिंग कर देंगे. सेम विल बी लाइक इन द व्हेन वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दैट सी. जैसे ये इसमें क्या होगा, 2 कार्बोनिल ब्रिजिंग, इसमें भी 2 कार्बोनिल ब्रिजिंग, 4 रोडियम जो जिसमें कोई मतलब 4 रोडियम में क्या होगा, टोटल 8 कार्बोनिल्स हो जाएगा, 2 कार्बोनिल्स पर रोडियम, दैट इज टर्मिनल 1. अभी 2 कार्बोनिल अभी भी बचा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, वो कार्बोनिल को ब्रिजिंग कर देंगे, राइट? तो ब्रिजिंग के लिए हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये 2 कार्बोनिल के बीच एक ब्रिजिंग कर सकते हैं और ये 2 कार्बोनिल के बीच एक ब्रिजिंग कर सकते हैं, बस हम लोगों का काम खत्म. सो देयर कैन बी टोटल 3 अरेंजमेंट्स, दैट इज A, B एंड C. एंड आई थिंक ये पूरा चीज मैंने डिस्कस कर दिया. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बोलना, तो आई विल ट्राई टू क्लियर दैट आउट. और अगर किसी को इसके रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ पढ़ना होगा और या फिर मतलब प्रोमिनेंट कोई स्ट्रक्चर आपको चाहिए, तो आप ये वाला चीज़ देख सकते हो.
इसमें भी जो मैंने पढ़ा है वही यहाँ पे एक्चुअली दिखाया गया है कि टोटल 3 काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स कैन बी देयर, आइदर ये दो रोडियम के बीच एक बॉन्ड मिसिंग हो सकता है, या फिर ये दोनों के बीच, या फिर ये दोनों के बीच, दैट इज वन टॉप रोडियम रोडियम बॉन्ड्स और एट द बॉटम रोडियम रोडियम बॉन्ड्स और एट द एज। और जो भी रोडियम रोडियम बॉन्ड में एक बॉन्ड मिसिंग होगा, जैसे कि जो रोडियम में टोटल 3 बॉन्ड है, दैट इज रोडियम रोडियम टोटल 3 बॉन्ड है पर रोडियम, वही रोडियम के ऊपर 3 टर्मिनल कार्बोनिल हो जाएगा। ओके, हर एक स्ट्रक्चर में सेम है, वही रोडियम के साथ 3 टर्मिनल कार्बोनिल होगा। और बाकी रोडियम के साथ क्या होगा, बाकी रोडियम के साथ होगा 2 टर्मिनल कार्बोनिल एंड एक ब्रिजिंग कार्बोनिल। ओके, सो देयर कैन बी total 3 isomers. And if you want to look into a particular paper, I have already given that a link also, that is you can go through this, the hypothetical model for the formation of transition metal carbonyl clusters based upon 4n series skeletal numbers. So from here actually you can also look into the structure of Ra6CO63. So thank you for watching this video, and please subscribe this channel and like this video as much as possible and share this also. Thank you very much. See you in the next class. Bye bye.